Hello students, next topic is deadweight loss. Let's start. We begin by considering what the monopoly firm would do if it were run by a benevolent social planner. तो हम अब ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, कंसिडर करके चल रहे हैं कि मोनोपोली फर्म क्या करेगी इफ इट इज बीइंग रन बाय अ बेनेवलेंट सोशल प्लानर. The social planner cares not only about the profit earned by the firm's owners but also the benefits received by the firm's consumer. तो जो सोशल प्लानर होता है वो फर्म ओनर्स के प्रॉफिट का तो ख्याल रखता ही है, साथ ही साथ वो इस बात का भी ख्याल रखता है अबाउट द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय द फर्म्स कंज्यूमर्स. तो मतलब वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का एक तरीके से केयर करके चलता है सोशल प्लानर. The planner tries to maximize the total surplus, that is the producer surplus, which is basically his profit, plus the consumer surplus. So we know that total surplus is equal to consumer surplus plus producer surplus, right? And what is consumer surplus? Consumer surplus is amount, or I should write value to buyers minus amount paid by buyers, fine, plus amount received by seller minus cost to seller of providing that good. Okay, now if we see this amount paid by buyer and this amount received by seller, these two are equal to each other, right? And this is in negative and this is positive, so we can cancel out these two terms. बचेगा क्या यहाँ पर? What will be left? Value to buyers minus cost to sellers. Okay, value to buyer minus cost to seller, this is the total surplus. Total surplus equals the value of the good to consumer minus the cost of making the good incurred by the monopoly producer. तो यही फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पर लिखा है, that total surplus is value to buyer minus cost to seller. This figure analyzes how a benevolent social planner would choose the monopoly level of output. The demand curve reflects the value of the good to consumer. Just a second. Okay. तो ये फिगर आपको क्या बताती है? फिगर ये एनालाइज करती है कि कैसे एक बेनेवलेंट सोशल प्लानर जो है वो चूज करेगा मोनोपोली लेवल ऑफ आउटपुट. The demand curve reflects the value of the good to consumer as measured by their willingness to pay for it. तो जो डिमांड कर्व है वो क्या शो करता है? वैल्यू टू बायर्स, मतलब विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे बाय द कंज्यूमर. The marginal cost curve reflects the cost of the monopolist. और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो शो करता है कॉस्ट टू मोनोपोलिस्ट. Thus, the socially efficient quantity is found where the demand curve and marginal cost curve intersect. इसीलिए आपको सोशली एफिशिएंट क्वांटिटी कहाँ मिलेगी? ये एफिशिएंट क्वांटिटी आपको कहाँ मिलेगी? जहां पर डिमांड कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज एट दिस पॉइंट
value to marginal buyer is equal to cost to marginal seller. Fine. Below this quantity, the value of an extra unit to consumer exceed the cost of providing it. So increasing output would raise the total surplus. अगर हम ये देखें below this efficient quantity, if we see the value to the buyers exceed the cost to the monopolist. Value to buyers is greater than the cost to seller. So in this situation, increasing the output would raise the total surplus. And above this quantity, cost of producing an extra unit exceed the value of that unit to consumer. So decreasing output would raise the total surplus. And if we see above this efficient quantity, the cost to monopolist is greater than the value to buyers. So basically in this situation, decreasing output would raise the total surplus. And at the optimal quantity, value of an extra unit to consumer exactly equals the marginal cost of production. और अगर हम efficient quantity पर यहाँ पर देखें, so at this optimal quantity, value to marginal buyer will be equal to value to marginal seller. If the social planner were running the monopoly, the firm could achieve this efficient outcome by charging the price found at the intersection of demand and marginal cost curve. तो अगर कोई सोशल प्लानर जो है वो मोनोपोली रन कर रहा है तो फर्म अपने एफिशिएंट आउटकम को कैसे चूज करेगी? बाय चार्जिंग द प्राइस एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व. At this point, basically, this price will be chosen by a benevolent social planner. Thus, like a competitive firm and unlike a profit maximizing monopoly, a social planner would charge a price equal to the marginal cost. तो अगर हम इसकी बात करें, so basically at this point price is equal to marginal cost. ये जो प्राइस है ये मार्जिनल कॉस्ट के तो इक्वल ही है इस पॉइंट पर, राइट? तो जो एक बेनेवलेंट सोशल प्लानर है वो एक कॉम्पिटिटिव फर्म की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज इट वुड चार्ज अ प्राइस इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. And because this price would give the consumers an accurate signal about the cost of producing the good, consumer would buy the efficient quantity. We can evaluate the welfare effects of monopoly by comparing the level of output that monopolist chooses to the level of output that social planner would choose. तो अगर हमें monopoly के welfare effects को measure करना है तो हम क्या करेंगे? हम compare करेंगे किसको? The level of output that monopolist chooses to the level of output that social planner would choose. The monopolist chooses to produce and sell the quantity of output at which MR and MC curve intersect, and social planner would choose the quantity at which demand and marginal cost curve intersect. Monopolist का तो हमको पता ही है कि monopolist किस output को choose करेगा at which MR equals to MC. और social planner, अगर social planner जो है वो monopoly को run कर रहा है तो वो एक competitive firm की तरह behave करेगा, तो वो उस quantity को choose करेगा at which price is equal to marginal cost. So we can see this difference in the figure. अगर हम ये efficient quantity की बात करें, this efficient quantity is being produced by a social benevolent planner at which price is equal to marginal cost. और अगर हम एक monopolist की बात करें, monopolist उस quantity को choose करेगा at which MR is equal to MC. So this is the efficient quantity produced by the benevolent social planner, and this is the monopoly quantity produced by a monopolist, and this is the monopoly price. और अगर हम एक benevolent social planner के प्राइस की बात करें तो वो ये प्राइस चार्ज करेगा. अब हमको साफ दिख रहा है that
that a monopolist is charging a higher price, right? The monopolist produces less than the socially efficient quantity of output. तो ये हम easily इस फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मोनोपोली की क्वांटिटी है, इट इज लेस देन द एफिशिएंट क्वांटिटी. The inefficiency of monopoly can be measured with a deadweight loss triangle. तो यहां पर ये जो डेडवेट लॉस का जो ट्रायंगल है, यहां पर हम इस इनएफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं ऑफ अ मोनोपोलिस्ट. It is the reduction in economic well-being that results from the monopoly's use of its market power. अब यहाँ पर जो monopolist है वो अपनी market power को use कर रहा है, वो higher price charge कर रहा है. Higher price charge करने की वजह से क्या हो रहा है? There are some potential consumers जिनकी जो value to good है, it is greater than the marginal cost, but they are not participating in the market. They are not consuming the product because a monopolist is charging a higher price. And that is the reason कुछ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड्स हैं, इट इज प्रिवेंटिंग दोज म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड्स टू टेक प्लेस. कि कुछ ऐसे कंज्यूमर्स थे जिनकी वैल्यू टू गुड वाज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, बट बिकॉज द मोनोपोलिस्ट वाज चार्जिंग हायर प्राइस, सो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट, और जिसकी वजह से कुछ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड नहीं हो रही है मार्केट में. तो ये यहां पर वो इस इनएफिशिएंसी की बात कर रहा है, इनएफिशिएंसी ड्यू टू मोनोपोलिस्ट मार्केट पावर. And that is the reason it is creating a deadweight loss. Clear? So that's all from my side. Thank you.